अच्छा, मई जून 2014 हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था। और इसके अंदर हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था सुपर व्यू। तो आज की क्लास का टारगेट ये है कि हम इसका एटलीस्ट पार्ट डी जो है ना वो अच्छे से समझ के रिवाइज करके बात कर सकें उसके ऊपर। केस में एक दफ़ा जल्दी से वापस देख लेता हूँ ताकि हम लोग फिर से साथ हो जाएं सारे। और एक सेकेंड। ओके। एस वी मैन्युफैक्चर्स SV manufactures large flat screen televisions for use at music concerts and sporting events. Despite weak economic conditions, SV's sales are increasing. Market share has also grown because the use of dynamic pricing. However, profits are decreasing. Jakes, the operations director, believes that decreasing profits are due to change in productivity. Jakes has produced Table 1. एनुअल प्रोडक्टिविटी डेटा दिया हुआ था जिसमें हमें ये पता चल गया था कि हमारी जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो कम और कैपिटल प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ रही थी। Jill, the finance director, has identified a liquidity problem at SV. She has produced the following extract from SV's accounts. हमने इसकी liquidity analysis और liquidity position के ऊपर भी बात की थी। Definitely आपको मेरे ख्याल से याद होगा last class. Ali, the managing director, is worried by recent newspaper reports about SV and its flat screens. कोई newspaper में report आई है. Let's see what is this. Several spectators were injured when a flat screen fell over during a concert. ठीक है, कोई flat screen गिर गई थी तो spectators were injured. Okay. Concerns expressed over high energy use of large flat screens. ठीक है, हाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करती हैं लार्ज फ्लैट स्क्रीन्स. Complaints about the noise levels at music events. Components from SV flat screen sourced from a low wage countries exploiting workers. ठीक है. SV's directors have recently voted themselves high bonuses. Okay. अब मतलब काफ़ी चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी सोशली रिस्पॉन्सिबल वे में मैनेज नहीं हुई हुई. सवाल ये है, डिस्कस द व्यू discuss the view that SV should have corporate responsibility as a business objective. Discuss the view that SV should have corporate responsibility as a business objective. Okay. 11 मार्क्स. वैसे तो ये 10 मार्कर था लेकिन क्योंकि हम लेटेस्ट स्ट्रक्चर में इसको मैंने कन्वर्ट किया था तो दिस इज 11 मार्कर. और कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का बेसिक मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जितना आपने पढ़ा है या जितना आपको पता होना चाहिए, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है या जो डायरेक्ट वर्ड आपके माइंड में आना चाहिए उसको कहते हैं स्टेक होल्डर्स. कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज व्हेन आप हर स्टेक होल्डर को, जिसमें आपके एम्प्लॉयज़, जिसमें आपके कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स, बैंक्स, गवर्नमेंट, सोसाइटी, अगर आप सारे स्टेक होल्डर्स को इक्वल कंसिडर करो, सिर्फ आप अपने ओनर्स को टॉप प्रायोरिटी पे ना रखो और आप अपने सारे एम्प्लॉयज़ को, जहाँ सारे एम्प्लॉयज़, सारे कस्टमर्स, सारे सप्लायर्स की राइट्स को इक्वल ट्रीट करो, उसको कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज व्हेन every stakeholder group is given equal importance and not just the shareholders. ठीक है. अच्छा, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का वर्ड एग्जाम में हमारे सामने जब भी आएगा तो हमारे माइंड में जो सेकंड वर्ड आना चाहिए दैट शुड बी स्टेक होल्डर्स. ठीक है. एंड अगर एक बिजनेस सारे स्टेक होल्डर्स को इक्वल वैल्यू करता है उसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. और एग्जाम में विद द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम, CSR से रिलेटेड दो सवाल आते हैं जो हमें आने चाहिए. हाउ अ बिजनेस कैन बी socially responsible एंड वाई अ बिजनेस शुड बी सोशली रिस्पॉन्सिबल. दो सवाल आते हैं एग्जाम में, दो तरह के सवाल, कि एक बिजनेस सोशली रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है और एक बिजनेस
सोशली रिस्पॉन्सिबल क्यों होना चाहेगा, ठीक है, ये दोनों बातें हमें आनी चाहिए। लेट्स से अगर हम हाउ, इफ यू टॉक अबाउट हाउ अ बिजनेस कैन बी सोशली रिस्पॉन्सिबल, तो अब हम हर स्टेक होल्डर से अलग अलग एंगल से बात कर सकते हैं। जैसे हाउ अ बिजनेस कैन बी सोशली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स एम्प्लॉइज, व्हाई, हाउ दे शुड गिव देम fair salaries, they should not discriminate them, they should provide them safe working conditions, extra time अगर काम कर रहे हो तो उनको सपोर्ट करें बिल्कुल। कस्टमर्स के साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज, व्हाट इज social responsibility with customers? कस्टमर्स, कस्टमर्स के साथ क्या होगी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट दें, फेयर क्वालिटी दें, अनफेयर प्राइसेस चार्ज ना करें, और प्रॉपर इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, झूठ बोल के अपना प्रोडक्ट ना बेचें, है ना, अनफेयर प्राइसेस चार्ज ना करें। डिस्काउंट ऑफर्स देना इज नॉट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो तो फिर एक ऑफर है ना, ठीक है। और शेयर होल्डर्स के साथ प्रोवाइडिंग देम सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न्स, प्रोवाइडिंग देम कंप्लीट इंफॉर्मेशन, उनसे झूठ ना बोलें, उनको कंपनी की इंफॉर्मेशन के बारे में प्रॉपर बताएं, उनके पैसों को सही से इन्वेस्ट करके उनको अच्छी इंफॉर्मेशन टाइम पे प्रोवाइड की जाए। जैसे ये जो सुपरव्यू कर रहा था डायरेक्टर्स वाला पॉइंट, एसवीज डायरेक्टर्स हैव रिसेंटली वोटेड देमसेल्व्स हाई बोनसेस, अपने ही आप को जो है वो ज़्यादा सैलरीज दे रहे थे, तो प्रॉब्ली दिस इज अनफेयर विद द फंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है। विंडो ड्रेसिंग ना करें डेफिनेटली, ठीक है। और सप्लायर्स, सप्लायर्स के साथ पेमेंट ऑन टाइम, फुलफिलमेंट ऑफ एनी ऑफ द टर्म्स, अगर आपके कोई सप्लायर के साथ टर्म्स है, एग्रीमेंट है, उसको पूरा करें, ठीक है। सो देखो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, दैट हाउ अ बिजनेस कैन बी सोशली रिस्पॉन्सिबल, एंड व्हाई अ बिजनेस शुड बी सोशली रिस्पॉन्सिबल। व्हाई मतलब क्यों एक बिजनेस को सोशली रिस्पॉन्सिबल तरीके से चलना चाहिए, क्यों, क्यों? क्योंकि आप जब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलते हो तो आप एक अच्छी रेपुटेशन मेंटेन कर सकते हो, जिससे आप एक अच्छा अपना ब्रांड इस्टेब्लिश कर सकते हो, आप उससे अच्छी प्राइसेस चार्ज कर सकते हो, प्रीमियम प्राइसेस, फिर आप अच्छे एम्प्लॉयज अट्रैक्ट कर सकते हो, आप अच्छे इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट कर सकते हो। बेसिकली इससे आपका रेपुटेशन और इमेज बहुत अच्छा होता है। यू कैन अवॉइड द अटेंशन ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, यू कैन अवॉइड द अटेंशन ऑफ मीडिया, यू कैन अवॉइड द प्रेशर फ्रॉम गवर्नमेंट डेफिनेटली, ठीक है। देर आर अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ बीइंग सोशली रिस्पॉन्सिबल, बट द प्रॉब्लम इज कि अगर आप बहुत अच्छे इंसान बन के चलोगे तो आपकी कॉस्ट्स बढ़ जाती हैं, ठीक है। और प्लस जब कॉस्ट्स बढ़ जाती हैं तो उसके बाद अल्टीमेटली प्रॉफिट्स पे हिट आता है, और फिर उसके बाद आपको शायद प्राइसेस बढ़ानी पड़ती हैं, जिसके बाद आप मार्केट में थोड़ा सा अनकम्पेटिटिव भी हो सकते हो। अगर कस्टमर ऐसे हैं जो सिर्फ सस्ता प्रोडक्ट ढूंढते हैं, या कस्टमर्स ऐसे हैं जो सिर्फ पैसे बचाने का सोचते हैं, तो प्रॉबली ऐसे सोसाइटी में जहाँ पे लोग सिर्फ प्राइस कंसर्न है, दे आर नॉट कंसर्न अबाउट द सोसाइटी, तो शायद फिर उधर वहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलना मुश्किल हो जाता है। और प्लस सम ऑफ द शेयर होल्डर्स मे एक्चुअली गेट डिससेटिस्फाइड, क्योंकि कुछ शेयर होल्डर्स ये सोचते हैं कि भाई आप रिटर्न्स मैक्सिमाइज करो ना भाई, वी आर ओनली कंसर्न अबाउट मनी, आप हमारे पैसों से क्या कर रहे हो ये सब इतने अच्छे अच्छे काम। तो कुछ इन्वेस्टर्स को शायद बुरा भी लग सकता है, ठीक है। और एक सवाल अभी आया था कि विंडो ड्रेसिंग क्या होता है। तो विंडो ड्रेसिंग इज बेसिकली व्हेन यू आर ट्राइंग टू मॉनिटर और यू आर ट्राइंग टू एडजस्ट द फाइनेंशियल डेटा, ताकि जो अकाउंट्स है ना वो पॉजिटिव नजर आए, बेसिकली ट्राइंग टू प्रेजेंट द नंबर्स इन द मोस्ट पॉजिटिव वे, अच्छा अच्छा दिखाना बेसिकली, यस, ठीक है। अच्छा, तो दो तरह के सवाल आते हैं कि सी एस आर या हाउ अ बिजनेस कैन बी सोशली रिस्पॉन्सिबल, एंड व्हाई अ बिजनेस विल बी सोशली रिस्पॉन्सिबल, ठीक है।
क्यों होना चाहिए सोशली रिस्पॉन्सिबल? ताकि आप अपनी रेपुटेशन मेंटेन कर सकें, ताकि आप अच्छी प्राइसेस चार्ज कर सकें, ताकि आप अच्छे एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट कर सकें, ताकि आप अच्छे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकें, प्रेशर ग्रुप्स एंड गवर्नमेंट की अटेंशन को अवॉइड कर सकें। लेकिन हावेवर आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन आपको शायद प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी। एंड सम ऑफ द शेयर होल्डर्स, कुछ शेयर होल्डर या कुछ इन्वेस्टर ये सोचेंगे कि आप उनके मैक्सिमम रिटर्न के लिए काम क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों इको फ्रेंडली मशीन्स ला रहे हो? आप क्यों अच्छी सैलरीज एम्प्लॉयज़ को दे रहे हो? या आप क्यों अपनी एम्प्लॉयज़ की वर्किंग कंडीशंस के ऊपर पैसे लगा रहे हो? कुछ शेयर होल्डर ये सोचते हैं जिसका ये तो सब खर्चे हमारे हमारे रिटर्न्स हैं बेसिकली। यू कुड हैव गिवन अस मनी अगर आपके पास बहुत पैसे आ रहे हैं तो शेयर होल्डर्स कुछ सोचना शायद, कुछ शेयर होल्डर्स माइट नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन अ सोशली रिस्पॉन्सिबल बिजनेस। सो दोनों साइड्स होती हैं सीएसआर की। हमें दोनों साइड्स का पता होना चाहिए कि एक बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना चाहिए या नहीं। और एग्जाम में अगर आपसे वो पूछ ले कि शुड अ बिजनेस बी सोशली रिस्पॉन्सिबल, तो आप क्या कहोगे? शुड अ बिजनेस बी सोशली रिस्पॉन्सिबल, येस और नो, और डिपेंड्स? डिपेंड नहीं करता। आप बोलोगे यस, यस अ बिजनेस शुड बी सोशली रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। हाँ, प्लस माइनस ज़रूर होंगे, प्रायोरिटीज़ में थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर आएगा, यस, वेरी गुड पॉइंट। और बट आप हमेशा कोशिश करोगे कि आप हर मामले में अच्छे इंसान बन के रहें। और हाँ, अगर शॉर्ट टर्म में आपकी कॉस्ट्स बढ़ भी रही हैं, अगर शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा मसला नज़र भी आ रहा है, तो भी कोई बात नहीं, आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ज़रूर होगा। आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स उसके नज़र आ जाएंगे, ठीक है। और अगर हम यहाँ देखते हैं तो इसमें देखो क्या क्या इश्यूज चल रहे थे। अ, अ, एक तो ये कि हमारी फ्लैट स्क्रीन गिर गई थी तो कुछ लोग इंजर्ड हो गए थे। क्या ये हमारा मसला है? इज इट इज इट अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इशू? द फ्लैट स्क्रीन फेल ओवर ड्यूरिंग अ कॉन्सर्ट। यार ये तो मतलब आपने सही से अब मतलब मैं नहीं कह रहा कि शायद हमारी वजह से ही नहीं हुआ, बट आई नीड टू थिंक ऑफ दिस के मे बी जो जिस जगह कॉन्सर्ट हो रहा था उन्होंने मिसमैनेज किया हो यार। मतलब अब देखो, अब एग्जाम में आपको इसने ये सारे एरियाज दे दिए ना। अब वो कह रहा है कि बताओ हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए। तो अब मैं ऑप्शंस में भी थोड़ा सा क्लासिफाई कर सकता हूँ। हाई एनर्जी यूज वाला मसला, येस, इट्स अ बिग प्रॉब्लम एंड आई शुड वर्क ऑन इट। आई शुड वर्क ऑन द एलईडीज और द फ्लैट स्क्रीन्स जो थोड़ा सा एनर्जी कंजम्पशन पे काम करें या कम से कम एनर्जी कंजम्पशन पे बेस्ड हो। नॉइज लेवल्स एट म्यूजिक लेवल्स, म्यूजिक इवेंट्स, यार म्यूजिक इवेंट में नॉइज नहीं होगी तो मज़ा कैसे आएगा? मतलब म्यूजिक इवेंट में तो नॉइज होनी चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग? जब म्यूजिक इवेंट हो और नॉइज ना हो तो किस तरह से चलेगा काम? मतलब प्रॉपर वो चाहिए होगा, बेस वगैरह भी प्रॉपर चाहिए होगा, इसके बगैर तो शायद। लेकिन खैर, यस, वी शुड इंश्योर कि हम हम लोग ऐसी जगहों पे एलईडीज या ऐसी जगह पे फ्लैट स्क्रीन हैं जो थोड़ा सा दूर के एरियाज में हो। लेकिन हाउएवर थोड़ा सा ये वाली चीज़ पे कंट्रोल करना मुश्किल होगा, बिकॉज नॉइज लेवल्स को कंट्रोल कैसे करें ये एक बड़ा डिबेट हो जाएगा। ये कस्टमर्स और सोसाइटी के साथ अच्छा होगा कि अ, हम ऐसी जगहों पे कॉन्सर्ट्स में अपनी स्क्रीन्स दें, क्योंकि हम तो फ्लैट स्क्रीन्स बनाते हैं ना, हम लोग कॉन्सर्ट्स तो नहीं कराते। हम लोग तो फ्लैट स्क्रीन्स बनाते हैं यार। यस, दीज आर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, बिल्कुल, ठीक है। और components for SV flat screen sourced from the low wage countries exploiting workers. मतलब
अगर हम लोग सप्लाईज खरीदते हैं फ्रॉम सच एज हम लोग कीनिया से या साउथ अफ्रीका से खरीदते हैं, तो अब वहाँ पे लोगों के साथ बहुत गलत सलूक किया जाता है या उनको अच्छी सैलरीज नहीं दी जाती, तो प्रॉबली कुछ लोग ये कहते हैं कि यार आप ऐसी कंट्रीज को क्यों सपोर्ट कर रहे हो जो जैसे पाकिस्तान में सियालकोट से हमारी जो फुटबॉल जाती थी वर्ल्ड कप के लिए, वो वाली बैन हो गई थी। क्यों? क्योंकि हम चाइल्ड लेबर यूज़ करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। तो पूरे वर्ल्ड कप ने पाकिस्तान से फुटबॉल्स का बैन कर दिया था ना। तो वो इसीलिए किया था क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर बैन लगा दिया कि भाई नहीं, ये लोग अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा ट्रीट नहीं करते। ठीक है। और SV's directors have recently voted themselves high bonuses. Okay, that is also a big debate. शेयर होल्डर्स के साथ ये शायद इतना अच्छा रिएक्ट नहीं कर रहे। डिस्कस द व्यू दैट एसवी शुड हैव कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। अच्छा, 11 मार्क्स है। तो हम शुरू करेंगे कहाँ से? इंट्रोडक्शन से, है ना? कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, corporate responsibility is when corporate responsibility corporate responsibility is when the management of a business consider the interests of all the stakeholders. Corporate responsibility, yes, you can write the word stakeholder objective. Yes, very good. Corporate responsibility is when the management of a business consider the interests of all stakeholders rather than just rather than just the shareholders, rather than just the shareholders. क्वेश्चन क्या है कि क्या इनका कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? 11 marks. So I'll write in favor and I'll write against also, right? If SV is if SV has corporate responsibility as their objective, if SV has corporate responsibility as their objective, then they can use it as a marketing tool. They can use it as a marketing tool. है ना? क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से चलोगे तो you can use it as a marketing tool. This means this means that if the interests of all stakeholder groups, if the interest of all stock stakeholder groups is are considered, this means that if the interests of all the stakeholder groups are considered,
then the business will be able to maintain a strong reputation in the market. If SV has corporate responsibility as their objective, then they can use it as a marketing tool. This means that if the interests of all stakeholder groups are considered, then the business will be able to maintain a strong reputation in the market. The customers actually value socially responsible businesses, actually value socially responsible businesses, which can help SV को क्या फायदा होगा इससे? अगर कस्टमर्स उस चीज को वैल्यू करते हैं तो which can help SV to establish a strong brand name and image and the customers may stay loyal to such businesses. May stay loyal to such businesses as the flat screen का क्या हुआ था गिर गई थी ना as the flat screen fell over during concert, this might not be the fault of SV, but giving importance to such events such as ऑफरिंग क्या ऑफर कर सकते हैं मतलब वैसे तो हमारी कोई ऐसी गलती नहीं थी लेकिन फिर भी अगर हम उनका कंसर्न शो करें अगर कोई कॉन्फ्रेंस कर लें अगर कुछ ऑफर कर मतलब मे बी सम सॉर्ट ऑफ कॉम्पेंसेशन टाइप चीज है ना स्पेक्टेटर्स को तो कॉम्पेंसेशन हम नहीं देंगे लेकिन जो हमारी कंडोलेंसेस बड़ा अफसोस हुआ बहुत अफसोस हुआ आपके सर पे स्क्रीन गिर गई ठीक है मे बी कोई कॉम्पेंसेशन दे देना या जो हमारा क्लाइंट होगा जिसने हमसे फ्लैट स्क्रीन ली होगी हम उसको चार्ज ना करें इवेंट का फिलहाल है ना किसी तरह such as offering compensations or not or by not charging for that event from condolences लिख सकते हो बिल्कुल लिख सकते हो कि offering our concerns for those people
लेकिन उन कंपनी को क्या कहेंगे जो हमारे से टीवी लेती होंगी from the clients, from the musical clients, the from the clients arranging from the client arranging that event. है ना, मतलब हम उससे चार्ज ना करें, कस्टमर्स को बेसिकली हम अच्छा ट्रीट कर रहे हैं. यस, ऑल्सो द also the flat screens uh, consume high energy levels and they should try they should try to bring in technology to bring in technology to reduce energy consumption and this can actually help them actually help them to use it as their unique selling point create कर सकते हैं ना इससे भी. And premium prices can also be charged from the customers. जी, एक पॉइंट इज इनफ. एक प्रॉपर मैंने फेवर में बात कर रहा हूँ, फिर मैं अगेंस्ट में बात करूंगा. देख रहे हो मैं किस तरह से केस से भी लेके आ रहा हूँ और फिर किस तरह से उसके ऊपर बात भी कर रहा हूँ. ठीक है. यस, दोनों में कर रहे हो तो ज़्यादा बेहतर है. एक साइड कर लो, करो केस, जितना केस से रिलेट कर सकते हो दोनों पॉइंट्स में, यू आर ऑन द राइट वे. However, operating in a socially operating in a socially responsible way will include a lot of costs for the business. However, operating in a socially responsible way will include a lot of costs for the business. उसमें काफी सारे खर्चे भी हो जाते हैं. Yes, you can write that. This means that when a business try, this means when a business try to treat their stakeholders however however operating in a socially responsible way will include a lot of costs for the business. This means that when a business try to treat their stakeholders in an equal manner,
Then this means that when a business tries to treat their stakeholders in an equal manner, then they will be paying they'll be paying reasonably well to employees and charge and then they'll be paying reasonably well to employees, and if they try to invest in if they try to invest in environment friendly technology. However, operating in a socially responsible way will include a lot of costs for the business. This means that when a business try to treat their stakeholders in an equal manner, then they will be paying reasonably well to employees. And if they try to invest in environment friendly technology, then all of this will be a burden. All of then all of this will be a burden on operating costs, on financial resources, on financial resources, on financial resources of SV. The profits are currently profits कम हो रहे थे ना अभी currently profits भी कम हो रहे थे इनके the profits are currently decreasing the profits are currently decreasing and any further decrease and any further decrease may dissatisfy some of the shareholders may dissatisfy some of the shareholders. All of these costs might mean that the prices for flat screens will have to be increased, that the prices for flat screen will have to be increased, and this can affect the competitive this can affect the competitive position of the business. This can affect the competitive position of SV. Competitive position of SV.
कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि क्या इनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलना चाहिए या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं चलना चाहिए, है ना। और बहुत ही अगर नेक्स्ट लेवल कंक्लूजन लिखना है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि यार ये इतनी सारी क्लेम्स है न्यूज़पेपर रिपोर्ट में, हम हर क्लेम के अगेंस्ट तो बात नहीं कर सकते, लेकिन इट्स लाइक इट शुड बी लाइक कि हम जितना ज़्यादा हो सके करें, बट ऐसा नहीं कर सकते कि सब कुछ ही करना शुरू कर दें, एडी सेंटर तो नहीं बन जाएंगे। ओवरऑल आई थिंक हैविंग, अब मैं ज़रा स्पीड में लिखूंगा, आप लोग भी ज़रा स्पीड में, ठीक है। ओवरऑल आई थिंक हैविंग corporate responsibility as an object, as a business objective, overall I think having corporate responsibility as a business objective will surely involve significant costs in the short term, but in the longer run it can produce significant benefits. It can produce significant, in the short run तो yes आपकी cost बहुत बढ़ जाएंगी, but in the longer run it can produce significant benefits. The society is getting socially aware, and the media, such as this newspaper report, can cause severe business problems and operating in a socially responsible way and operating in a socially responsible way can surely help to such avoid such reputation loss. SV can not respond to each of the claims immediately, but at first but at first सबसे पहले इनको क्या कर लेना चाहिए, इन प्रॉब्लम्स में से सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, but at first they should not purchase components from low cost countries, है ना। And they should ensure that voting high salaries is communicated
to the shareholders clearly. है ना, एक तो इतनी ज़्यादा सैलरी दी है तो आप शेयर होल्डर्स को क्लियरली बता दो, बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ. इट्स कम्युनिकेटेड टू द शेयर होल्डर्स क्लियरली as as keeping information, keeping such announcements private will be unfair with the shareholders. Will be unfair with the shareholders. Overall, I think having corporate Overall, I think having corporate responsibility as a business objective will surely involve significant costs in the short term, but in the longer run, it can produce significant benefits. The society is getting socially aware, and the media, such as newspaper report, can cause severe business problems, and operating in a socially responsible way can surely help to avoid such reputation loss. As we cannot respond to each of the claims immediately, but at first, they should not purchase components from low cost countries, and they should ensure that voting high salaries is communicated to the shareholders clearly, as keeping such announcement private will be unfair with the shareholders. That is how you write conclusions. कंक्लूजन को मैंने ज़्यादा वैल्यू इसलिए किया है क्योंकि मेरे एक दो पॉइंट्स मैंने एप्लीकेशन ऊपर नहीं किए थे, तो मैंने कंक्लूजन में उसको सही से इनकॉर्पोरेट कर दिए. कंक्लूजन इज़ अ प्रॉपर पैराग्राफ. ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया है, नो, बट आपको कंक्लूजन को भी प्रॉपर वैल्यू देनी है और कंक्लूजन के लिए भी प्रॉपर कंटेंट रखना है. कंक्लूजन 3 से 4 मार्क्स का कंक्लूजन होता है, 3 to 4 मार्क्स. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उसको अच्छी इम्पोर्टेंस दो कंक्लूजन को. अच्छी, ये थोड़ा ज़्यादा ही लिख दिया, यस, बट ओवरऑल फिर भी हमें इम्पोर्टेंस ज़्यादा रखनी पड़ेगी फॉर कंक्लूजन. ठीक है, दैट इज़ हाउ यू अटेम्प्ट 11 मार्कर, जिसमें आपने 2 पॉइंट्स यानी कि 2 पार्ट्स लिखे और फिर आपने अपना कंक्लूजन दिया. इज इट क्लियर?